A very good morning to all the students of class 4. Dear student, today we will study the 11th chapter of social science named as human resources. Dear student, this chapter we will understand from the book Our Land, Our World. So let's begin with the chapter. Dear student, as I am sharing my screen with you, which will help you to understand the chapter more clearly. So very first, you should know what are the learning objectives of the chapter. So, dear student, as I am sharing my screen with you and I am also highlighting it. In this chapter, you will learn about man as a resource first. Secondly, you will learn about rapid growth of population. Thirdly, you will understand the effect of growing population. And lastly, you will understand the better human resources. So, these are the 4 learning objectives of this chapter. Dear student, let's begin with the chapter Human Resources. So, dear student, this is chapter 11, Human Resources. Very first, we will discuss about man as a resource. Soil, water, forest, wildlife, minerals and livestock are natural resources. Dear student, आपने पहले इससे पहले वाले चैप्टर में भी ये पढ़ा हुआ है कि ये हमारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं. क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं? सॉइल, वाटर, forest, wildlife, minerals and livestock. So this is very important question. What are the natural resources? So the answer is soil, water, wildlife and livestock are our natural resources. But they are not useful by themselves. These are men who use them for their benefits. Being used by themselves, men are also resources. They are called human resources. So, what is human resources? The men are who use them, which is natural resources for their benefit. जो लोग अपने बेनिफिट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं. Being used by themselves, men are also called resources and they are called human resources. So human resources are best of all resources. तो human resources क्या होते हैं? सारे resource में से सबसे best होते हैं because they can shape the other resources to benefits. क्यों? क्योंकि वो बाकी रिसोर्सेज को एक बेटर शेप देके उनका यूज करते हैं अपने फायदे के लिए. So dear student, as I am removing it, and this is the pictorial part of the things which man use as a resource. So this is wood which is used by human being. जिसे क्या करते हैं? लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, अपने घर के दरवाजे बनाते हैं. हॉर्स है, इसको हम क्या करते हैं? राइड के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए यूज करते हैं. वैसे ही कोल है, उसे मशीन के लिए यूज करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में यूज होते हैं. और धागा है जो नेचुरल रिसोर्स है, जिसका हम कैसे यूज करते हैं? स्वेटर्स बनाते हैं और भी बहुत सारे क्लॉथ्स बनाते हैं. Let's discuss the second learning objective, which is rapid growth of population. So, dear student, as this is the pictorial chart of rapid growth of population in India. This is the chart ratio. In 1959 and 51, as you can see, this is 30 crores, and in 2019, it is 137 crores. So, this is a very high number. So, let's discuss the rapid growth of population. So, dear student, we got independence in 1945.
1947. When we got independence? In 1947. This is very important question. When we got independence? So we got independence in 1947. We adopted planning for the orderly social economic development. Our aim was to put the natural resources to maximum use and available to all. हमारा एम क्या है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज कर सके और सबके लिए वो अवेलेबल हो. We achieved much progress with the help of human resources. Our agriculture produce has tripled due to better method of farming. तो जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो ह्यूमन रिसोर्स का यूज करके बेटर फार्मिंग टूल्स का यूज करके हमने क्या कर दिया है, उसका प्रोडक्शन ट्रिपल 3 गुना ज्यादा कर दिया है. मोर irrigation and fertilizers. Large iron and steel plants and other factories have been set up to make many of things we need. So now we have many more schools, hospitals, roads, railway trains, aeroplanes and TV stations. So अब हमारे पास क्या है? Number of schools, number of hospitals, number of roads, number of railway trains, number of aeroplanes and number of TV stations बहुत ज़्यादा हैं. But the benefit of this progress have not yet reached a large section of people. They are still very poor. They could not get enough food, job and education. तो आज भी हमारे देश में बहुत सारे गरीब हैं जिसे आज भी खाना, जॉब और एजुकेशन नहीं मिल पाई है. One of the reason for this problem is that our population is growing very rapidly. तो इसका मेन रीजन क्या है? क्यों हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग गरीब हैं? क्यों आज भी लोगों को खाना, जॉब, एजुकेशन नहीं मिल पाई है? बिकॉज हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है. एज यू कैन सी इन पिक्चर, इन 1951 दिस इज 36 करोड़ and in 2019 it is 137 crore. Our country is very rich in human resources. As I am removing it, let's move ahead. More than 137 crore people live in India. कितने लोग रहते हैं इंडिया में? 137 crore. Present population is more than the time that was at the time of independence. तो जो हमारे देश की अभी करंट पॉपुलेशन है वो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उस पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा है. So dear student, as I am highlighting it, India is the second most populous country in the world after China. तो इंडिया का जो रैंकिंग है वो पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे है और सबसे फर्स्ट में कौन है? चाइना. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई एम हाईलाइटिंग इट. व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द population? So India is the second most popular country. Which country is topped in a most populous, or you can say which is the most populous country in the world? So the answer is China is the most populous country in the world. Number 1, China is the most populous country in the world and India is the second most populous country in the world. So the reason for this is that our population is growing very rapidly. तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है. So let's understand the third learning objective, which is effect of the growing population. Let's understand it.
So, dear student, rapidly growing population has created problems in every sphere. जो बढ़ती पॉपुलेशन है वो हर जगह पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है. सो वो हमारी डेली लाइफ में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेट्स डिस्कस इट. Safe drinking water, enough food, dispensaries, road, lights. क्या होता है, ये सब हमें कम मिल पाते हैं बिकॉज, और हमें प्योर नहीं मिल पाते बिकॉज हमारे जो देश की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें साफ पानी, अच्छा पानी, स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता बिकॉज पॉपुलेशन इज वेरी ह्यूज. इनफ फूड नहीं मिल पाता, डिस्पेंसरीज, रोड, सारी जगह बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं. देयर इज ऑल्सो शॉर्टेज ऑफ जॉब की भी शॉर्टेज रहती है. हाउस, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स की भी कमी रहती है क्योंकि नंबर ऑफ पीपल्स बहुत ज्यादा है. जब आप नंबर ऑफ लोग ज्यादा है तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको बहुत ही क्राउडेड मिलेगा जिससे आपकी हॉस्पिटल फैसिलिटी पे भी ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा. It is difficult for the government to provide essential facility to all. और ये गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत ही मुश्किल काम है कि सभी लोगों को अच्छे से essential services provide करें because the population is very huge. So almost 69% of Indians live in the villages. Most of the village lack of civil amenities and jobs. So more and more villagers are moving to the city in search of job. तो अगर गांव में उन्हें अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही है, इसलिए गांव के बहुत सारे लोग धीरे धीरे शहर की तरफ मूव कर रहे हैं अपने लिए रोजगार ढूंढने के लिए. It has created very serious problem. Population of cities is growing. शहर की आबादी बढ़ रही है. People live in the bad to worst condition of crowded house. They lack safe drinking water, education and proper health care. As a result, even able people cannot become good workers. इस सिचुएशन में क्या है, जो अच्छे लायक लोग भी हैं उन्हें भी अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं. अच्छे लोग, गुड वर्कर्स, अच्छे काम के लिए अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं. So these are the effects of the growing population, dear student, which is very important part of this chapter. Let's understand the better human resource. So as I am removing it, this is better human resources. Human resources can be trained to become better only when they are not many more in numbers. So therefore the growing population must be checked. More important than the number is the quality of humans. Every family should be small family. सभी families को कैसा होना चाहिए, एक छोटी family होना चाहिए. People having small family should be rewarded. और जो छोटी families होती है उन्हें हमें reward देना चाहिए. Besides many more plans, there is need to improve the living condition of the people. They should be given education, training for healthcare, new skills, cooperation and morality. So these will inspire them for hard work themselves. तो ये सारी चीजें जब हम उन्हें देंगे तो वो खुद ही अच्छा काम करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए इंस्पायर होंगे for their country, अपनी country के लिए. Only wise and skilled people will prove a useful human resource. बहुत ही skilled लोग और wise लोग अच्छी ह्यूमन रिसोर्स प्रूफ हो सकते हैं. In turn, it will make the best use of other resources. और वही बाकी के resources का एक best use
कर सकते हैं. So dear student, this is all about the chapter 11, which is human resources. We will understand, we will learn chapter 12 in our next class. Thank you.